Bismillahirrahmanirrahim. Consider the following three problems for Echo as it grows through takeovers. Which problem will be easiest for Echo to overcome? Justify your answer. More difficult to control the business. इसका हमने लिख लिया हुआ है. Lack of finance का लिख लिया हुआ है. Lack of business culture भी लिख लिया हुआ है. क्लैश ऑफ बिजनेस कल्चर जरा रीड आउट करो. एक मिनट. अहमद पढ़ लो कहाँ तक लिखा है क्लैश ऑफ कल्चर. कह रहे हैं इसके बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था. विशाल आपने लिखा बेटे. यस सर. आज क्लैश ऑफ कल्चर का बताओ कहाँ तक लिखा है. पूरा रीड आउट करना. Sir, different organizations, different approach towards setting and achieving targets. FO might have centralized structure. यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था आपका. Yes, sir. FO might have a centralized organizational structure, which means यहाँ पे पूरा लिख दिया मैं. अच्छा उनमें कुछ सुन भी उस दिन ऑनलाइन. ठीक है. अच्छा different organizations have different approach towards setting and achieving targets. Problem solving like FO might have centralized structure. Being family owned. And other company might be promoting a culture. Another company might be promoting a culture of employee trust. And task culture. So employees from other organizations would feel uncomfortable. So employees from other organizations would feel uncomfortable. अब हम आते हैं कंक्लूजन में. एक मिनट दीजिएगा मुझे. हाँ कंक्लूजन पे आते हैं. अब कंक्लूजन में एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपने तीनों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और उसने हमसे कहा है कि इनमें से कौन सा प्रॉब्लम विल बी इजीएस्ट फॉर एफओ टू ओवरकम. मैं अनकॉन्शियसली मोस्ट डिफिकल्ट कर रहा था. इजीएस्ट फॉर एफओ टू ओवरकम. इस चीज की बात कर लेते हैं. इसके लिए मैं सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा. इसका हम थोड़ा डेटा जरा दोबारा देखते हैं. इसने मेरे ख्याल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताया हुआ था यहाँ पर. इसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताया 20 नंबर. हाँ नहीं 20 ईयर्स अगो था. नहीं इसका नहीं बताया. फिक्स कॉस्ट है 10,000 की वैल्यू. ठीक है. ठीक है जी वापस आते हैं. हाँ अच्छा जी. अब इसका मैं पहले कंक्लूजन लिखवाता हूँ फिर आपको उसकी लॉजिक बताता हूँ. और यहाँ पर एक गलती जो मेरे से होने लगी थी और आप लोगों ने भी अलर्ट रहना है. उसने इजीएस्ट टू ओवरकम पूछा है. आमतौर पे ना मोस्ट डिफिकल्ट या चैलेंजिंग टू ओवरकम का पूछते हैं. तो मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द बिजनेस, लैक ऑफ फाइनेंस एंड क्लैश ऑफ बिजनेस कल्चर्स. अच्छा इससे अब मैं लिखना शुरू करता हूँ. आई थिंक clash of business cultures will be easiest to manage because it's in interest of new employees. It's in interest of new employees from taken over business
from taken over business to cooperate and acknowledge FO's FO family's significance. Chen family significance. Chen family significance. ये चैन लिखा हुआ है उसने पहली लाइन में चैन फैमिली सिग्निफिकेंस सेकेंडली डी करो डी करो फिर आगे जाओ थैंक यू सेकेंडली चैन फैमिली हैज बीन सक्सेसफुल secondly Chen family has been successful in surviving for 20 years for surviving through 20 years. So number of times their opinion might be more valid and to solve problems and problem solving ability might be more effective. We should look at that. Effective. Valid and their problem solving ability more effective. अब सारे जरा मेरी बात सुनना है अहमद इशारा अगर आप दोनों पेपर देने चाह रहे हो ना तो ये कंक्लूजन वाली बात खास तौर पे ध्यान से सुनना अगर आप लोगों के सामने पेपर है तो आप लोगों ने पहली बात ये नोट करनी है जो कि शुरू में बच्चे गलती करते हैं हमने कंक्लूजन में जो बातें लिखी हैं हमने ऊपर वो बातें नहीं लिखी थी यानी अगर हम लोगों ने क्लैश ऑफ कल्चर को कंक्लूजन में लिखा है इट शुड बी इजीएस्ट टू मैनेज तो उसका जो डिस्क्रिप्शन थी उस प्रॉब्लम की हमने उन डिटेल्स को यहाँ पर रिपीट और उसकी सबसे ऑब्वियस रीजन ये है कि आपको एक ही बात के 2 दफा नंबर एक बार दूसरी बात बेटे ये है कि मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन के नंबर लेने थे यानी मैंने उसकी दी हुई मालूमात को इस्तेमाल करना था तो मैंने यहाँ पर 20 इयर्स का सर्वाइवल चैन फैमिली का कंट्रोल फैमिली कंट्रोल इन सारी बातों को जिक्र किया है नॉट जस्ट कॉपी पेस्टिंग प्रोसेस किया हुआ है उसका कॉज एंड इफेक्ट लिखा हुआ है तो मुझे एप्लीकेशन के मार्क्स भी मिल जाएंगे तो इसमें हम लोगों ने जो कंक्लूजन दिया हुआ है उसके 2 ही तरीके होते हैं या तो ये करते हैं कि आप डेटा की बेसिस के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन लिखते हैं और सवाल अभी इसी पेपर में आने हैं या फिर आप या तो आप डेटा की बेसिस के ऊपर करते हैं या इस बेसिस के ऊपर करते हैं क्वेश्चन 4 या आप कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज रोक लेते हैं ऊपर लिखने की बजाय और उनको यानी जिसको रेकमेंड करना हो उसके सारे एडवांटेज और सारे डिसएडवांटेज ऊपर नहीं लिखते और उनको कंक्लूजन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो कंक्लूजन जो है इस लिहाज से पेपर 1 से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको तकरीबन क्या हर पार्ट बी में कंक्लूजन देना होता है तो अगर आपको ये अलग से उसके लिए आर्गुमेंट बिल्डअप करना नहीं आएगा तो वो नहीं होगा एक और इम्पोर्टेंट बात जो ये है इस सवाल में नहीं था ऐसा यहाँ पर उसने जो ऊपर 3 चीजें दी नहीं थी मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द बिजनेस लैक ऑफ फाइनेंस और क्लैश ऑफ बिजनेस कल्चर इनमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड थी नंबर ऑफ टाइम्स वो ऐसे ऑप्शन देता है जिसके अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं मिसाल के तौर पे व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल तो 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की इसी तरह जगह दी होगी जिस तरह यहाँ पर इसने 3 ऑप्शन दिए हैं
और कंक्लूजन में लिखना होगा कि सबसे सूटेबल कौन सा है। तो हर सोर्स ऑफ फाइनेंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज आप ऑलरेडी ऊपर लिख चुके होंगे, तो या आप डेटा की बुनियाद पर रेकमेंड करोगे या आप उसकी बुनियाद पे करोगे मजीद एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आपने ऊपर नहीं लिखे होंगे। अब जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं क्वेश्चन 2 के ऊपर। इसका explain two reasons why it is important for F4 to manage all of its resources effectively when manufacturing product। इसमें reason 1 लिखिएगा। Question 2A explain two reasons why it is। भाइयों बात सुन लो। explain two reasons नाम लिखिए अपना ऊपर। कोई बात नहीं है, कल ही हम लगा एक मेरा ही है। गुलशन आरा सिलिंग लिख देना। अच्छा बेटे explain two reasons why it is important for F4 to manage all of its resources effectively when manufacturing products। एक बात जो मैंने पता नहीं कितनी दफा रिपीट की है और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो ये है कि लफ्ज इफेक्टिव का ध्यान में रखा करें कि लफ्ज इफेक्टिव का मतलब होता है समथिंग विच गेट्स यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग में सॉरी रिसोर्स मैनेजमेंट का के साथ जब हम इफेक्टिव का लफ्ज लगाते हैं स्मॉल बिजनेस वाले, ठीक है। जब हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ इफेक्टिव का लफ्ज लगाते हैं तो इसके दो दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एक तो ये कि रिसोर्सेज जाया ना हो, और दूसरा जो डिजायर्ड आउटपुट है और आउटकम है, आउटपुट यानी क्वांटिटी और आउटकम यानी जिन क्वालिटी को आप चाह रहे हैं वो आपको सारा कुछ मिल जाए। तो इस वजह से आप लोगों ने रिसोर्स मैनेजमेंट लिखना होता है। अब सबसे पहले रीजन 1 मैं आपको बता रहा हूँ, पेंसिल से लिखिएगा वरना बैक ऑफ द पेज लिखिए, अभी डायरेक्ट पेपर स्पेस में ना लिखिएगा। रीजन 1 है फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट्स। खर्चों को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट जरूरी है। क्वेश्चन 1 का डी 12 नंबर के लिए रीजन 1 जल्दी से सब बच्चे खुद करेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई है फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। मैंने आपको हिंट दिया है इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, और यहां पर मैं आप सबको बता दूं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 8 में से एटलीस्ट 2 मार्क्स आप एक्सपेक्टेड होते हैं एप्लीकेशन के। एटलीस्ट 2 मार्क्स जो मुझे याद है वो 3 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसका मुझे ब्रेकअप जहन में नहीं आ रहा। आप फिलहाल उसका 2 मार्क्स का एप्लीकेशन जहन में रखें। तो आपने दी हुई मालूमात को इस्तेमाल करके लिखनी है यहाँ पे बात। अच्छा बेटे अब इसका मैं एक मॉडल आंसर लिख पा रहा हूँ, और आपने या तो मेरे वाले में से गलतियां निकालनी है या अपने आप को 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन में से नंबर देने कि आपके ख्याल में कितने बनते हैं और क्यों। हमने रीजन 1 आइडेंटिफिकेशन की है फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट्स। इसका हम लोग लिखना शुरू करते हैं। wasting resources means that no revenue will be generated, but cost will be incurred for such resources and FO's shareholders have reinvested their profits in company FO's shareholders have reinvested profits in company for many years
So undue rising costs will not provide them with desired returns. Will not provide them with desired returns. Secondly, desired returns. Secondly, using sustainable methods, already results in higher costs. So such expensive inputs have already resulted in higher costs. So such expensive inputs should not be wasted. So such expensive inputs should not be wasted. पहला था controlling cost, resource effective utilization और remember that time is also a resource. तो दूसरा आप लिखिए for timely completion of production orders. Considering it is currently selling online, considering it is currently selling online, so it might have to deliver its tables and chairs. It might have to deliver its tables and chairs to different customers living in different parts of country Z. Living in different parts of country Z. So, if tables and chairs if furniture is not produced in time, as per commitment to customer, then it might delay delivery by a great deal. Delayed delivery by a great deal for customers from far-flung areas. Far-flung areas. And later, time-related commitment will also matter. बस थोड़ा सा देख लो. Later, time-related commitments will also matter